आपने उस बात को सच कर दिया कि behind every successful man there's a woman and behind both of them there are sauce. Yes, there's sauce. There has to be sauce. Definitely they have to be अच्छा वो जो ब्रांड की ज़बान में एक लफ्ज़ कहते हैं ना रेड ओशन, सो आप सॉसेस के साथ जब एंटर हुए तो इट वाज ऑल अ रेड ओशन. इंटरनेशनल मार्केट, सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स, लोकल भी बड़े जाइंट्स बैठे हुए थे इसमें जो काम कर रहे थे. सो हाउ डिड यू एबल टू एक तो स्ट्रोक ऑफ लक है, वो अपनी जगह है, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, सिचुएशंस बिल्डअप हो जाते हैं, बट आप इंटेंशनली भी कुछ स्ट्रैटेजीज लेते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि अच्छा यार इस तरह की पैकेजिंग करो, इस तरह की प्लेसमेंट करो, इस तरह की ट्रेड मार्केटिंग करो. सो एनी ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स दैट यू पुट इन प्लेस एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड दे हेल्प्ड. If they did not help, then what happened? How did you cope with those? अच्छा, जो आपका सवाल है कि what happened and what not happened, I would be very honest with you. There are two things in it. One is that when I started this, I used to always see कि and there was this question in my mind कि why is when I used to go and buy these sauces, because before that you need to keep in mind that I was in Philippines and Vietnam and with Philippines and traveling across the world. उन्होंने मुझे बहुत travel कराया. I think जितना I think शायद मेरे नसीब में बहुत travel था. So I used to travel I think each month somewhere because I was looking after 17 markets. Okay. And my KPI was I used to have to visit them once every year. Wow. So each month I was somewhere at some market, So I was getting exposure of various cultures, various foods, various product development, various tastes. So there was all of that in my background and somewhere in my mind. So I said, जब मैं वापस आया पाकिस्तान, so I used to go and see, ये सारी बाहर की क्यों लेनी, अपनी क्यों नहीं. और अपनी जो थी वो थर्ड क्लास से भी ज़्यादा, वो मैं अपने दुश्मन को भी ना दूँ, वो इस तरह की थी. लाल रंग मिला हुआ है, किसी में काली इंक मिली हुई है, all of that was just very pathetic quality. And I used to always come back and say कि why can't we do this, why can't we make a good product. And so that was one of my starting point, that the market was empty because nobody was making good product. And when I talked to the pundits and the gurus of this food industry, all of them said कि यार अगर ये करना होता तो हम नहीं कर लेते, ये अगर आसान बिकना होता तो हम नहीं बेच लेते, हम तुमसे मतलब बहुत बड़े. And I used to say कि यार बात तो सही है, अगर बेचना होता तो मुझसे अच्छी बनाकर बेच देते, और बात तो सही कर रहे. But I was so drained with my idea and my thinking. I said whatever it is, I will do it. Maximum what will happen, I will fail. If I fail, I will wind up, I will go back, and if you're coming from a corporate sector, you know yourself. You say यार कोई ना कोई मुझे 1 लाख रुपए की तो नौकरी दे ही देगा, कोई ना कोई मुझे इतनी तो दे ही देगा, और जितनी मेरी जान पहचान थी, मैं मेरा लाम्स के साथ एनडी के साथ, इतने पैसे तो कोई ना कोई मुझे गेट पर दे देगा, तो मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ काम. एंड देन आई वाज कॉन्फिडेंट माई सेल्फ कि यार मैंने इतना काम किया हुआ है, क्या मतलब. एंड देन द गुड पार्ट वाज दैट मेरे बॉसेस से जब मैंने बात की ना, ये कह रहा हूँ, तो मुझे दोनों ने, एक का नाम मिगेल था, एक का नाम रिकार्डो था, दोनों ने मुझे ये नहीं बोला कि यार ये तू क्या कर रहे हो. उन्होंने बोला कर लो, कुछ नहीं होता तो हमें एक ईमेल लिख देना. अच्छा, तो आई हैड दैट सेफ कॉर्नर इन कंफर्ट इन माई माइंड कि यार है कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा. जिस दिन मैंने रिज़ाइन करना था उस दिन पूरी रात मेरी बीवी नहीं सोई थी, मैं सो रहा था आराम से. फिर मैं सुबह उठा और मैं तैयार होता ऑफिस के लिए, बोली मैं सोई नहीं. मैं तू भी नहीं सोई भाई, तो बोलती यार व्हाट आर यू डूइंग. आई सेड रिलैक्स, नथिंग विल हैपन. सो आई थिंक एक वो था कि यार कंफर्ट था. ये सब बातें हम सच्ची सच्ची बता रहे हैं क्योंकि आपकी बेगम भी सुनेंगी ये प्रोग्राम, बिल्कुल सुनेगी वो. बट देयर वाज अगेन आई बिलीव फर्मली, if you make a good product, there's a market for it always. If you are giving services, even if you give a good service, there's a customer always for you. कहते हैं ना क्वालिटी पैसा बाय प्रोडक्ट है क्वालिटी का. हम दरअसल पहले दिमाग में पैसा, हम पहले पैसा सोचते हैं और फिर बाद में हम उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी को एनालाइज करते हैं. आप पहले प्रोडक्ट बनाए अच्छा, और फिर आप उसके हिसाब से उसकी प्राइस सेट करें, क्योंकि हमेशा हम क्वालिटी ढूंढी, कोई ना कोई क्वालिटी ढूंढ ही रहा होता है. Exactly, there's always consumer for quality. So I said that we'll make a good quality product and then we'll put it up there. We'll not compromise on the product. Until today, at Dipitt, the core fundamental, if you go and ask anybody, is that the quality has to be the same from which it was on day one, because every sauce is either checked by me, my wife, along with obviously there's system and the protocol, everybody, but
that's the thing that we consume at home. So the first complaint will come from us ourselves, rather than anybody else. So that's a very fundamental thing. Then the second question about what happened in the market was, for that my answer would be, which is, I don't know whether you want to hear or not, I was very lucky. When I brought in the sauces, I think Imran Khan government came or something happened, the dollar went up, he put on duties on the imported sauces, so the imported sauces that went was away. the best time to launch local product. And then another thing happened was that at that point of time, economy was also picking up, and Pakistan was performing better in COVID rather than a lot of other people in before even COVID also. We were picking up, right? Because election हुए थे उसी साल हुए थे 2018 में, so things were getting better. So I think I was very lucky because I got the momentum. And the tides were in our favor, so we took that tide. कहते हैं right place Yes, at the right time. right place at the right time with the right product at the right price. So all the P's were there for us. So we did that, and then we got lucky, and then market पे मिले. And I would say here the credit should go also to our consumer and the people in the food industry. They helped me a lot. I remember मैं बाबी टुनाइट गया और मैंने उधर के ओनर से बोला हमारी ये केचप है, आप ये रखिए. उन्होंने ट्राई की, उनको अच्छी लगी. बोला अच्छा आज से मैं, एक और बहुत बड़ा ब्रांड था, उन्होंने बोला आज से मैं ये रिप्लेस करता हूँ, तुम्हारी आ जाएगी. मुझे किसी ने दूसरा सवाल नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया. इसी तरह मैं बहुत सारे दोस्तों के पास गया जिनकी बड़ी बड़ी चेन्स थी. आई आस्क्ड देम कि आई नीड अ फेवर, एंड ऑल ऑफ देम सेड के नोबडी क्वेश्चन मी के नहीं, या किसी ने मुझे लटकाया नहीं. सब ने मुझे बोला अच्छा ठीक है, और सब ने मुझे ये बोला भाई क्वालिटी ना ख़राब करी, मेहरबानी तेरी. एंड वी हैव स्टक टू दैट, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड. एंड आई थिंक शेल्फ में हमें फ़ायदा ये मिला, हमने बड़ी डिफरेंट अप्रोच ली थी शेल्फ पर. हमारे पास कोई पैसे ही नहीं थे किसी को कुछ देने के लिए, कुछ ट्रेड मार्केटिंग जो आप पूछ रहे हैं हमारे पास थे ही नहीं कुछ देने के लिए. मेरे पास वही थे पैसे जो मुझे फिलिप मॉरिस ने दिए थे जाते हुए, तो वो तो मैं सारे लगा चुका था, वो सारे गवा चुका था. तो मेरे पास थे ही नहीं. मैं तो सबसे ये बोलता था भाई कर सकता है तो कर दे, मेहरबानी तेरी. आई थिंक मेरे कॉर्पोरेट करियर से ना सब बहुत सारी दोस्तियाँ थी, तो वो हेल्प करते थे मुझे. वो एज ए दोस्त लेते थे, एज अ बिजनेस पार्टनर नहीं लेते थे, दोस्त लेते थे, तो वो हेल्प कर देते थे. सो मैं तो जाकर खुद बोतलें रखा था उनके स्टोर में, वो बेचारे हटाते नहीं थे, वो बिक जाती थी, मुझे पैसे दे देते थे. सो दिस इज़ यूज टू हेल्प. आई थिंक हेल्प उस वक्त ये हुई कि इम्पोर्टेड सॉसेज महंगी हो गई और कम आने लगी. सो वी बिकेम देयर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. तो वो फिर हमें जगह वो खाली होती गई, तो हम ही को मिलनी थी वो जगह, क्योंकि बाकी जो शहजादे थे वो बनाते नहीं थे सॉसेस कोई भी, और वो लाल रंग काला रंग बनाया करते थे सब, तो वो लोग लेते नहीं थे. Because consumer is very smart. Lot of time in the meeting room we think consumer is dumb, but consumer is the most smart in this whole equation. So consumer pick up the quality right there at the go. So I think consumer started picking it up, and from there we worked on. So there was not any strategy at which we did at trade. The only strategy we did at trade or at Dipitt was quality and right price. We didn't. Yes, one thing we didn't did was that हमें किसी एक वक्त में ये आया कि जी अब इम्पोर्टेड सॉस ख़त्म हो गया, अब आप प्राइस बढ़ा दें. जो नॉर्मली माइंडसेट होता है, अब ये ख़त्म हो गया, अब आप ये बढ़ा दें. I said no, we will not overcharge the consumer. We will charge what is our due share. We will not overcharge them because they have given us respect. So why should we should reciprocate the same. So and until today, if we see, we make a peri peri sauce, which is exactly similar to the other peri peri, the international ones. We have 1/3 the price. We have never increased the price on it because we said कि यार जो हमारा ड्यू शेयर है, we'll just keep that as a constant. That's it. इस पूरी कॉन्वर्सेशन से ना एक बात मेरे जहन में आई कि एक तो आपको शायद आपका जो नौकरियों के ऐसे ट्रैवल था, उस एक्सपोजर ने बहुत फ़ायदा दिया, बिकॉज वेरेवर वी गो वी टेस्ट द फूड देयर. तो वो आपको होता है ना, आपको कुछ तो कोई तो था ना कि हाँ भाई मुझे इससे मैच करना है टेस्ट. दूसरा पैकेजिंग, इट मैटर्स अ लॉट. हमें बिल्कुल शुरू में लगा कि ये लोकल प्रोडक्ट नहीं है. दिस वाज द रीजन वी पिक्ड इट अप. हमारा भी सर्वे में यही आता है, about 50% of our consumers still thinks that we are imported. हाँ. yes. और इसी तरह एक और भी ब्रांड है, मैं खैर नाम ले लेती हूँ, OPTP. जब वो खुला था तो बिकॉज ही हिमसेल्फ केम फ्रॉम अमेरिका, तो हमें लगा कि अच्छा ये अमेरिकन ब्रांड है, और हम बड़े अमेज थे बिकॉज आई नो द फैमिली. जब उन्होंने बताया नहीं, हमने घर में बना के, तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है. तीसरा जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि पावर ऑफ नेटवर्क.
और यकीनन अगर आपके इतने दोस्त हैं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में सालों काम करते हैं, उनके दोस्त नहीं होते, या तो अपने आप को हर एक से कंपटीशन समझते हैं. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस विद यू मोर कि do you think that networking is very important and since it helped you in the business, तो ये जो हमारे देखने वाले हैं, आप क्या कोई टिप देंगे कि how to be good at networking and how to make and stay friends with people who are in corporate sector? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ होता है कि नहीं यार, it's a The tip is very easy. Be honest with yourself and with them. You know, at Lums, I was I think I was very social from there because we used to have so many clubs, drama line and all of these HR and all of these marketing clubs. So we were very social from there, and that grew up in my role. And all of my life I have been in a role where I've interacted with a lot of departments, be it product development, so you are interacting with a lot of various departments within the organization, or be it strategy where you are coordinating with a lot of other various departments. So I've always interacted with a lot of people, and that's I think one of my core skill set was to interact with people and to get the job just done. Be sincere. Yes, and so I always what my bosses taught me was, you know, be straight up with people and be honest with them, because you can fool them once, you can fool them twice, but you can't fool them thrice. So it's better to be straight up from day one, and I think that has always helped me.